Hello students, so today we are going to taking the Supreme Court part 2. In this part we are going to see only the question answer, because in part 1 we have done the Supreme Court lesson explanations. Okay, so in this part we are going to see the textbook question answer. First I am going to take the objective form of the question number 2, which is read the following statement in the reference to Ratnam municipality's case, put a tick marks for the correct and cross marks for an incorrect statement, and correct and rewrite the incorrect statement. Okay, so in question number 2 we are going to see first, then after we are going to take question number 1. Okay, so in question number 2, that is read the following statements in reference to Ratlam municipality case, put a tick mark for correct and cross for incorrect. And second one, they have given the correct and rewrite the incorrect statement. Okay, हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, इफ फॉल्स होगा तो हमें वो करेक्ट भी करना है. सो फर्स्ट वन इज म्यूनिसिपैलिटी टूक द केस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज it was dissatisfied with the decisions given by the lower court. So of course this one is correct, because municipality took the case to the district court as it was dissatisfied with the decisions given by the lower court. The first one answer is correct. So इसका हमें correct है तो करेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी करेक्ट है. इफ सिर्फ फॉल्स होगा तो हमें करेक्ट करना है. तो फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट है correct. Okay, the second one, municipality appealed to the high court against the judgment given by the supreme court. So that answer is wrong. So हमें ये correct करना पड़ेगा. So second one,
इसका आंसर आएगा रॉन्ग। तो हमें करेक्ट फॉर्म यहाँ पे करना है उसका। So correct statement है municipality appealed to the Supreme Court against the judgment given by the High Court. So यहाँ पे लिखा है municipality appealed to the High Court. तो यहाँ पे High Court की वजह यहाँ पे Supreme Court आएगा। municipality किसको अपील करेगी? Supreme Court को if High Court ने wrong decision दिया है तो against the decisions of High Court. So हमारा correct statement ऐसे आएगा municipality appeal to the High Court against the judgment given, sorry यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, बाय द, यहाँ पे हाई कोर्ट है। ओके, सिर्फ हमने ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऊपर किया है, हाई कोर्ट नीचे की। ओके, नेक्स्ट वन है द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट। और Supreme Court approve judgment so आंसर आएगा wrong. Okay, the Supreme Court approved the judgment given by the High Court. The answer is wrong. So हमें correct statement यहाँ पे लिखना है। Correct statement आएगा the Supreme Court upheld the judgment. Okay, not approve, upheld. So answer is the Supreme Court upheld the judgment passed by the Taluka Court in this case. Okay. So our question 2 is done. Okay. So question 1 हमें first करना है. First answer is correct, so उसे correct करने की जरूरत नहीं है. Second है false, तो उसका correct statement हमने यहाँ पे दिया है. Third answer है false, wrong, so उसका correct statement ये है. Okay. So आपको ये कॉपी करना है और लर्न करना है, नोटबुक में कॉपी करना है. So next one is
क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट है वो डिस्कस इट कर है, तो वो हम नहीं लेंगे। ओके, डिस्कस इट का है। तो सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाई शुड द जुडिशरी बी इंडिपेंडेंट। ओके, आंसर द फॉलोइंग से ले रहे हैं। सो सेकंड वन, व्हाई शुड judiciary be independent? Why should be judiciary independent? तो इसका आंसर मैं लिख के दे रही हूँ आपको कॉपी करना। ओके, बिकॉज should the judges be under
So now our question is, why should the judiciary be independent? Judiciary independent क्यों है? Because should the judge be under anyone's influence, or if they are controlled by any influential or powerful people, they will not be able to give impartial judgment. Therefore, our constitution does not allow any such interference. Consequently, the judiciary is independence of the legislative and executive body. Get it? So, first answer is done. Next, third question. Why is the public interest litigations considered to be important step? Okay, third one. The second हो गया. I am giving now third question's answer. Why is पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 पे. एंड दिस आंसर इज बिग, सो आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू. ओके, मैं आंसर ये बड़ा है, सो मैं आपको ये डिक्टेट करके दिखाऊंगी. और ये पेज आपको मिलेगा पेज नंबर 30 पे भी. ये आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से लिखते हो, स्पेलिंग चेकिंग के लिए कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक 30 पेज पे ये आप पिक्चर देख रहे हो, इसके यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आएगा और इसके 1-2 लाइन्स आएंगे, वो मैं बताती हूँ अभी. ओके, सो दैट इज पेज नंबर 30 पे आपको इसका आंसर मिलेगा. और मैं भी डिक्टेट करके दिखा रही हूँ आपको क्या है. Why is the public interest litigations considered to be important step? Public interest litigations important step क्यों है? मतलब PIL क्यों हम लोग रख सकते हैं, PIL क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर है, अब यहाँ से लिख सकते हो पुअर से, पुअर सेकेंड लाइन जो है टेक्स्ट बुक की पुअर से. सो आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू फर्स्ट. ओके, आपको ऐसे लिखना है, पुअर से लेके पूरा टेक्स्ट बुक ओवर तक आपको आंसर आएगा. हाँ, सो मैं अभी डिक्टेट कर रही हूँ. पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, DIFFICULT, difficult to go to the court. Okay, first line is done. Poor people find it very difficult to go to the court. The legal procedure का स्पेलिंग है PROCEDURES. प्रोसीजर, ये प्रोसीजर्स का स्पेलिंग है PROCEDURES. लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर्ड, रिक्वायर का स्पेलिंग है REQUIRE, रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क, बट also
it is very time consuming. फुल स्टॉप देना है. कंज्यूमिंग का स्पेलिंग है CONSUMING. कंज्यूमिंग. For a poor person who is illiterate. illiterate का स्पेलिंग है ILLITERATE. illiterate. And incurring INCURRING. incurring irregular. irregular का स्पेलिंग है IRREGULAR. irregular. income becomes really though TOUGH to really tough TOUGH really tough to go to court and demand justice. Full stop. Keeping these facts in mind, the Supreme Court announced announced the provisions of the public interest litigation. Public interest litigations PIL in the year 1980. In the year 1980. With this, the Supreme Court has made an efforts efforts that maximum people can reach up to the court for justice. Full stop देना है. justice के बाद JUSTICE justice. any individual का स्पेलिंग है INDIVIDUAL. any individual or institutions का स्पेलिंग है INSTITUTION can file a case on behalf of people from the deprived classes. deprived का स्पेलिंग है DEPRIVED. deprived classes. if any of the fundamental 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 rights and being violated violated, then a citizen can appeal straight straight in the High Court or the Supreme Court. After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived deprived sections sections of the society. For example, where file FILED to free labor for inhuman inhuman labor LABOUR
or release, RELEASE, release the prisoner, PRISONERS, prisoner from the jail in Bihar, 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 after their terms of punishment, PUNISHMENT, punishment was over, full stop, done. So our third answer is done. Okay. So next है that is state the various judgment given by the different court in the case of Ratnam municipality. अभी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा. फोर्थ है state the various judgment given by the different court in the case of Ratnam municipality. इसका आंसर आपको मिलेगा कि वेरियस जजमेंट बताओ डिफरेंट कोर्ट के. तो इसका आंसर है पेज नंबर 29 पे. आंसर आपको पेज नंबर 29 पे मिलेगा. 29 में आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे. ये पूरा कॉपी करना है जो ब्लू में लिखा है वो. ओके. सो फर्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. द मैजिस्ट्रेट, MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट gave the verdict, VERDICT, verdict in the favor of the residents, RESIDENTS, residents. ओके. ये होने के बाद ये पूरा ब्लू का म्यूनिसिपैलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड in their duty of maintaining cleanliness. Both the institutions are ordered to cleanse the place with immediate effect. Within 15 days, the work of the closed drainage should be completed. The municipality challenged the verdict in the Ratlam district court. The municipality challenged this verdict, VERDICT, verdict in the Ratlam district court. The judgment of the Taluka court is declared to be unfair, UNFAIR, unfair. The residents challenge the verdict in the High Court. The High Court sustained the verdict of the Taluka court but added to the verdict for a closed drainage system 7 months time is given instead, INSTEAD, instead of 15 days, 15 days.
The pits should be filled with soil, SOIL, to stop the water accumulation, ACCUMULADION, and mosquitoes, MOSQUITOES, mosquitoes breeding, BREEDING, breeding. All work should be completed within 2 years. Ratlam municipality was unhappy with the verdict, and so it moved to the Supreme Court. The Supreme Court sustained the judgment of the Taluka Court and further ordered that the chemical and the dye plant which were responsible for the pollution should be closed with the joint efforts to the municipality and the state government. Done. Our fourth answer is done. So our question answer is done of fourth lesson. Okay.